हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाए मोर चैनल मो एग्जाम साथी को। तो आज मैंने पढ़ा इंडियन पॉलिटी रो कंप्लीट गोटे रिवीजन क्लास। ये क्लास रे मैंने इंडियन पॉलिटी रो बेसिक जेति की फंडामेंटल जिनस हमको जानवर अच्छे से विषय आम रिवीजन करवा। मोर ये चैनल रे नुआ रे आसथिले आपण माने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आपण मानको सांग मानको सहित शेयर कर दियंतु। वीडियोर जो पीडीएफ टा आपण माने टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जिवे और डिस्क्रिप्शन रे अछि जायकि आपण जायकि ग्रुप रे जॉइन हो जानतु और ये वीडियो पीडीएफ टा डाउनलोड कर दियंतु। और चलंतु एटा अछि इंडियन। आज हम डिस्कस करबा इंडियन पॉलिटी रो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट और रिवीजन गुडी को करबा। तो प्रथम अछि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट। Supreme law. The Constitution of India is the supreme law of the country. Constitution of India is the supreme law of the country. Nature of Constitution. It is federal in structure with unitary features and is often described as a living document. Nature of Constitution कौन ना, it is a federal in structure with unitary feature and is often described as a living document. तापर key dates. It is adopted on 26 November 1949. केबे adopt कराई थिला ना 26 November 1949. Celebrated as Constitution Day. Constitution Day केबे पालन कराई जाए ना 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. Celebrated as Republic Day. 26 जनवरी 1950 रे एडा काम रे माने लागू होइतिला। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केबे एडा आउ बाहरी थिला। कॉन्स्टिट्यूशन रे केबे पालन करा जाने 26 नवंबर 1949 रे। आउ एडा केबे लागू होइतिला ना 26 जनवरी 1950 रे, जोटा कि रिपब्लिक डे। तापले फ्रेमिंग बॉडी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली framed the constitution talking about 2 years 11 months and 18 days to complete it. A constitution assembly डाको 2 वर्ष 11 मास 8 दिन लागिथिला कंप्लीट करिया भाई। केते दिन लागिथिला ना 2 वर्ष 11 मास 8 दिन। तारे की figures on the constitution assembly. प्रेसिडेंट सेतड़ो को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो की प्रेसिडेंट थिले। जते बडे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लिखा जाइथिला सेते बडे प्रेसिडेंट थिले हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आउ सेते बडे वाइस प्रेसिडेंट थिले ना एचसी मुखर्जी। आउ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के थिले ना बीएन राव। आउ चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन के थिले ना डॉक्टर बीआर अंबेडकर। चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी किए थिले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। तापर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडा की फिगर गुडाक जो माने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई छन्ते। की फिगर गुडी को आपन माने मन रखंतो। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, डाक्टिक कमिटी रो चेयरमैन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन। ए गुडी को आपन मन रखंतो। तापरे बोर्ड फीचर्स एंड रिसोर्सेस। आउ ए कॉन्स्टिट्यूशन को कोड आना जाइथिला। कोड को देशरो ए कॉन्स्टिट्यूशन को बरो करा जाइथिला ता हमें पढ़ला। फंडामेंटल राइट एडा कोड बरो करा जाइथिला ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट कोड बरो करा जाइथिला ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तापर जुडिशियल रिव्यू एडा कोड बरा जाइथिला ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए रो मते जुडिशियल रिव्यू आउ बरो करा जाइथिला। तापर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जा कहंती
सेटा को कोड नंबर कर जाइतला ना आयरलैंड DPSP आयरलैंड तापर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप एटा कोड नंबर कर जाइतला ब्रिटिश सिस्टम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सिंगल सिटीजनशिप एटा कोड नंबर कर जाइतला ब्रिटिश सिस्टम तापर फेडरल स्कैन एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर एटा कोड कराइतला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल स्कैम एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इमरजेंसी प्रोविजंस एटा कोड ना वेलमार्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजन जो नेशनल इमरजेंसी और जो स्टेट इमरजेंसी गुड़ी को कोड बर करा जाइतला ना वेलमार्क कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी रो वेलमार्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी तापर कनकरेंट लिस्ट एटा कोड एटा ऑस्ट्रेलिया कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया तर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका तर फंडामेंटल ड्यूटी एटा कोड ना USSR माने रशिया फंडामेंटल ड्यूटी कोड ना USSR रशिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड regulating act of 1773 laid the foundation of central administration and created the office of the Governor General of Bengal. Pitt's India Act 1784 introduced the system of double government, board of control and court of directors. Carter Act of 1833 centralized legislative power and made the Governor General of Bengal the Governor General of India. Government of India Act 1885 transferred administration from the East India Company to the British Crown. Indian Council Act 1909 morally meant reforms. Introduced separate electorates for Muslims. Government of India Act 1919 Montego claims for reforms. Introduced diarchy in provinces. Government of India Act 1935 introduced provincial autonomy and provided and foreign all India Federation and federal court. Next होची parts of the constitution. Our constitution of parts गुड़ी को हमें डिस्कस करिया. Parts 1 होची the union and its territory. Union and its territory. Part 1. Part 2 citizenship. Part 2 citizenship. Part 3 fundamental rights. Part 3 fundamental right. Part 4 directive principle of state policy. Part 4 directive principle of state policy. Part 4a fundamental duties. Part 4a fundamental duties. Part 5 the union. Part 5 the union. Part 6 the states. Part 6 the states. Part 9. Part 9 panchayatas. Part 9 panchayatas. Part 9a municipalities. Part 9a municipalities. Part 15 होची election. Part 15 election. Part 15 election. Part 18 emergency provisions. Part 18 emergency provisions. Part 20 amendment of the constitution. Part 18 amendment of the constitution. Next होची schedules of the constitution. Constitution schedule गुड़ी को कौन रही ना फर्स्ट schedule state and union territories. First schedule कौन रही ना state and union territories. Second schedule कौन salaries, allowances and privileges of constitutional authorities. Second schedule कौन रही salaries, allowances and privileges of the constitutional authorities. Third schedule forms of oaths and affirmations. Third schedule forms of oaths and affirmations. Next, fourth schedule allocation or seats in the Rajya Sabha. Fourth schedule
होची allocation of seats in the Rajya Sabha. Fifth schedule होची administration of scheduled areas and scheduled tribe. Fifth schedule होची administration of scheduled areas and scheduled tribe. Sixth schedule होची administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Sixth schedule is administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Seventh schedule is union list, state list and concurrent list. Seventh schedule is union list, state list and concurrent list. Each schedule is recognized languages. Each schedule recognized languages. Ninth schedule is laws protected from judicial review. Ninth schedule laws protected from judicial review. 10th schedule anti-defection provisions. 10th schedule anti-defection provisions. 11th schedule Panchayat subjects. 11th schedule Panchayat subjects. 12th schedule municipality subject. 12th schedule municipality subject. Next, important articles highly tested. Important articles को हम discuss करेगा. The Union and Citizenship. Article 1. The name and the territory of Union. The Union and Citizenship. Article 1. The name and territory of the Union. Next was Article 2 and 3. Admission or establishment of new state and formation or alteration of boundaries. Article 2 and 3. Admission or establishment of new state and formation or alteration of boundaries. Next, Article 5 to 10 cover citizenship at commencement and parliament's power to regulate it. Article 5 to 11 cover citizenship at commencement and parliament's power to regulate it. Next, fundamental rights. Article 14 equality before law and equal protection of laws. Fundamental right Article 14 equality before law and equal protection of laws. Next, Article 17 abolition of untouchability. Article 17 abolition of untouchability. Article 19 6 freedoms of citizen. Article 19 6 freedoms of citizen. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 21 protection of life and personal liberty. Article 21A free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Article 21A free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Article 32 constitutional remedies. Article 32 constitutional remedies. Next, directive principle and duties. Article 40 organization of village panchayatas. Directive principle and duties. Article 40 organization of village panchayatas. Next, Article 44 uniform civil code. Article 44 uniform civil code. Article 51A fundamental duties. Article 51A fundamental duties. Executive and Judiciary. Article 52 the President of India. Executive and Judiciary. Article 52 the President of India. Article 72 pardoning power of the President. Article 72 pardoning power of the President. Article 110 definition of a money bill. Article 110 definition of a money bill. Article 112 annual financial statement union budget. Article 112 annual financial statement union budget. Article 123 ordinance making power of the President. Article 123 ordinance making power of the President. Article 124 establishment and constitution of the Supreme Court. Article 124 establishment and constitution of the
Supreme Court, Article 148, Controller and Auditor General of India. Article 148, Controller and Auditor General of India. Article 226, Writ Jurisdiction of High Court. Article 226, Writ Jurisdiction of High Court. Article 280, Finance Commission. Article 280, Finance Commission. Article 324, Election Commission of India. Article 324, Election Commission of India. Article 352, 356, 360, National Emergency President Rule and Financial Emergency. Article 352, 356, 360, National Emergency President Rule, Financial Emergency. Article 368, Amendment of the Constitution. Article 368, Amendment of the Constitution. Next time पढ़ेगा writ jurisdictions. Habeas corpus means you may have the body used to produce a detained person before the court. Habeas corpus means you may have the body. Mandamus means we command, used to command a public authority to perform a duty. Mandamus means we command. Next, provision, issued to prevent an inferior court or tribunal from exceeding jurisdiction. Provision issued to prevent an inferior court or tribunal from exceeding jurisdiction. Certiorari, issued to quash the order of an inferior court or tribunal. Certiorari, issued to quash the order of an inferior court or tribunal. Habeas corpus means you may have the body. Mandamus means we command. Next is quo warranto means by what authority. Quo warranto means by what authority. Used to question the legal authority of a person holding public office. Next, Union Executive and Parliament. The President and Vice President, Electoral College, elected MPs and elected MLAs. Election method, proportional representation by single transferable vote. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा एमपीस और एमएलएस को इलेक्ट करा जाउछि. क्वालिफिकेशन एंड टर्म. मिनिमम एज इज 35 years. टर्म इज 5 years. मिनिमम एज 35 years. टर्म एज केते दिन पर्यंत रही पारिबे 5 वर्ष. मिनिमम वर्ष 35 वर्ष. Resignation and removal. President resigns to the Vice President and can be impeached for violation of the Constitution. President resigns to the Vice President and can be impeached for violation of the Constitution. Constitution violation द्वारा मध्य से कौन impeach होती. Vice President elected by members of both houses of Parliament and serves as ex officio chairman of Rajya Sabha. Vice President elected by
दुईटी हाउस पार्लियामेंट और दुईटी जाक हाउस मेंबर भाव इलेक्टेड होचंती सर्व्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट होचे पार्लियामेंटरी स्ट्रक्चर फीचर लोकसभा लोअर हाउस राज्यसभा अपर हाउस लोकसभा लोअर हाउस राज्यसभा अपर हाउस मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 प्रेजेंटली 543 इलेक्टेड 250 presently 245 12 nominated मैक्सिमम होचे 552 वर्तमान अछंती 543 मिनिमम 250 प्रेजेंटली वर्तमान अछंती 245 12 नॉमिनेटेड टर्म होचे नॉर्मल टर्म ऑफ 5 year परमानेंट हाउस one third retire every 2 year नॉर्मल टर्म रे 5 वर्ष रहंती परमानेंट हाउस रे कोन 3 भागे प्रति 2 वर्ष रे रिटायर होचंदी मिनिमम एज 25 वर्ष मैक्सिमम 30 years प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर किए ना थिबे मेन स्पीकर किंबा चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिबा जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट वाज द इनॉग्रेटेड ऑन 28 January 1950 जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 January 1950 retirement age Supreme Court judges retire at 65 years High Court judges at 62 years Supreme Court judges retire at 65 years High Court judges at 62 years Court of Records Supreme Court under Article 129 and High Court under Article 215 Supreme Court under Article 121 29 रही और High Court Article 215 रही। Next important constitutional body Election Commission of India Article 324 Election Commission of India Article 324 Union or State Public Service Commission Article 315 to 323 Union or State Public Service Commission होची Article 315 to 323 Finance Commission Article 280 Finance Commission Article 280 Control and Auditor General Article 148 Controller and Auditor General Article 148 Attorney General for India Article 76 Attorney General for India Article 76 Advocate General for the State Article 165 Advocate General for the State Article 165 Emergency Provision National Emergency Article 352 proclaimed on grounds of war, external aggression or armed rebellion. National Emergency Code Article 352 कौन होची ना grounds of war, external aggression and armed rebellion रे Article 352 लागू छी President's rule किंबा state emergency एटा कौन Article 356 President rule and state emergency Article 356
imposed if constitutional machinery of a state fails. State emergency केतले लागुची president rule ना imposed if constitutional machinery of a state fails. पुलिस संस्था किंबा कौन सी संस्था बंद हेले स्टेट इमरजेंसी लागुची. नेक्स्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 never proclaimed in India so far. Financial emergency article 360 never proclaimed in India so far. Important constitutional amendments. Next which important constitutional amendment. First amendment 1951 added the 9th schedule. First amendment 1951 added the 9th schedule. 42nd amendment 1976 called mini constitution added fundamental duty and socialist, secular and integrity to the preamble. 42nd amendment act रे कौन ऐड केबे 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कहा जाए कौन ऐड करा जाइथिला फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल. 44 amendment 1978 replaced internal disturbance with armed rebellion. 44 amendment केबे 1978 replaced internal disturbance with armed rebellion. 61 amendment 1988 reduced voting age from 21 to 18 years. 61 amendment reduced voting from 21 to 18. 73rd to 74th 1992 constitutional status to panchayatos and municipalities. 73rd and 74th amendment कौन केबे 1992 कौन constitutional status to panchayatos and municipalities. 86th amendment 2002 made education a fundamental right. Article 21A. 86th amendment केबे 2002 कौन made education a fundamental right. Article 21A. 101st amendment 2016 introduced GST. 101st amendment केबे 2016 कौन introduced GST. 103rd amendment केबे 2019 10% reservation for EWS. 103rd केबे 2019 कौन 10% reservation for EWS. नेक्स्ट होचे लैंडमार्क जजमेंट्स. केशव नंद भारती केस 1973 कौन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. लैंडमार्क जजेस कौन केशव चंद्र भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. मिनेरा मिल्स केस 1980 balance between fundamental right and DPSP. मिनेरा मिल्स केस 1980 balance between fundamental right and DPSP. SR Bomai case 1994 limits on president rule and federalism. SR Bomai case केबे 1994 limits on president's rule and federalism. Visakha case 1997 guidelines against sexual harassment at the workplace. Visakha case 1997 guidelines against sexual harassment at the workplace. Puttaswamy case 2017 right to privacy as part of Article 21. Puttaswamy case 2017 right to privacy as part of Article 21. Navtej Singh Johar case 2018
decriminalized consensual same-sex relations. Navtej Singh Johar case 2018 decriminalized consensual same-sex relations. ए जाक लैंडमार्क जजमेंट्स गुड़िक जो केस जाक स्टडी करा जायछि एई आर्टिकल गुड़िक अंडर रे केस गुड़िक स्टडी करा जायथिला. नेक्स्ट होछि इम्पोर्टेंट कमिटीज एंड कमिशन. बलवंत राय मेहता कमिटी होछि रिकमेंडेड 3 टायर पंचायत राज. बलवंत राज मेहता कमिटी कौन रिकमेंडेड 3 टायर पंचायत राज. अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड 2 टायर पंचायत राज. अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेड 2 टायर पंचायत राज. स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज. स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज. सरकारिया एंड पंची कमिशंस सेंटर स्टेट रिलेशंस. सरकारिया एंड पंची कमिशंस सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. मंडल कमीशन सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. मंडल कमीशन सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. नेक्स्ट होची स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नर अपॉइंटेड by the president. Normal term was 5 years. Minimum age is 35 years. Governor appointed by the president. Normal term of 5 years. Minimum age was 35 years. Legislative Council Vidhan Parishad Permanent House. Minimum age was 30 years. Article 169. Legislative Council Vidhana Sabha विधान परिषद परमानेंट हाउस मिनिमम एज हो 30 इयर्स. आर्टिकल 169. लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा नॉर्मल टर्म हो 5 इयर्स. मिनिमम एज हो 25 इयर्स. लेजिस्लेटिव असेंबली हो विधानसभा नॉर्मल टर्म हो 5 इयर्स. मिनिमम हो 25 इयर्स. गवर्नर रोचे कार्यकाल 5 वर्ष. बयस हो 35 वर्ष. विधान परिषद मिनिमम वर्ष हो 30 वर्ष. को आर्टिकल 169. लेजिस्लेटिव असेंबली जोड़ा कि विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष. मिनिमम एज हो विधानसभार 25 मिनिमम एज रोचे 25 वर्ष. नेक्स्ट होची लोकल गवर्नमेंट पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज. पंचायत को लिखाई पार्ट 9 73rd अमेंडमेंट 1992. 11th शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट. पंचायत को पार्ट 9 पार्ट 73rd अमेंडमेंट 1992 रे 11th शेड्यूल कंटेन करछि 29टा सब्जेक्ट. म्युनिसिपालिटी होछि पार्ट 9A. म्युनिसिपालिटीज होछि पार्ट 9A. 74 अमेंडमेंट 1992. 12th शेड्यूल कंटेन 18 सब्जेक्ट. म्युनिसिपालिटी पार्ट 9A 74 अमेंडमेंट 1992 रे 12th शेड्यूल कंटेन 12 शेड्यूल अच्छे कंटेन 18 सब्जेक्ट. बोथ मैंडेट एट लीस्ट 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन पाई 1/3 रिजर्वेशन अप्लाई करुछि. नेक्स्ट इलेक्शन एंड फेडरलिज्म. डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज. रेसिडुअल पावर्स belong exclusively to Parliament. All India Service created under Article 312 via Rajya Sabha resolution. All India Service created under Article
312 Rajya Sabha resolution. Zonal councils, statutory bodies under States Reorganization Act 1956. Zonal councils, statutory bodies under the States Reorganization Act 1956. Next was important constitutional comparison. Money bill versus financial bill. Every money bill is a financial bill but not vice versa. प्रत्येक मनी बिल गोटे फाइनेंशियल बिल अटे किंतु प्रत्येक फाइनेंशियल बिल गोटे मनी बिल नुहे रखु प्रत्येक मनी बिल गोटे फाइनेंशियल बिल हो पारे किंतु प्रत्येक फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो पार ना. आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226. Article 226 High Courts is wider than Article 32 Supreme Court as it is cover legal right to. Article 226 High Court is wider than Article 32 Supreme Court as if it cover legal right to. Adjournment versus prorogation versus dissolution. Adjournment versus prorogation versus dissolution. Adjournment suspend a sitting. Propagation ends a session. Dissolution ends the Lok Sabha entirely. Adjournment कौन सस्पेंड करछे सिटिंग को पावर थिबो सेटा सस्पेंड करि पारियो जे पावर थिबो सिटिंग ताको सस्पेंड करि पारियो. प्रोरोगेशन एंड सेशन जो सेशन गुडी को डिसाइड हेथिबो सेटा को समाप्त करियाला होची प्रोरोगेशन. डिसोल्यूशन मीन्स लोकसभा समाप्त होबाडा होची डिसोल्यूशन. Next, the preamble. Ideals: justice, social, economic, political, liberty, equality, fraternity. Ideals गुड़िको कौन? Justice गुड़ी social, economic, political. आओ preamble गुड़िको ideal गुड़िको justice, liberty, equality, fraternity. Key terms होची sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Key term गुड़िको sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Next, classification of directive principle. DPSP. Classification: Gandhian, village panchayatas, cottage industries, cow protection. Gandhian गुड़िको village panchayatas, cottage industries, cow protection. Socialistic: equal pay, living wage, free legal aid. Socialistic कौन? Equal pay, living wage, free legal aid. Liberal: intellectual, uniform civil code, UCC, environment protection, international peace. Liberal, intellectual, uniform civil code, UCC, environment protection, international peace. Miscellaneous held facts. Each schedule currently contain 22 recognized language. Each schedule कौन लिखे ना currently 22 recognized language. 22 लैंग्वेज वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करछि. राइट टू प्रॉपर्टी नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300
right to property under Article 300A under constitutional legal right under Article 300A which is right to property. Next is important first in the Indian polity. First general election was 1951 to 52. First general election 1951 to 52. First president Dr. Rajendra Prasad. First president Dr. Rajendra Prasad. First prime minister Jawaharlal Nehru. First prime minister Jawaharlal Nehru. First chief election commissioner Sukumar Sen. First election commissioner Sukumar Sen. First chief justice of India H.J. Kania. First chief justice of India H.J. Kania. Next was key parliamentary terms and procedure. 0 hour in Indian parliamentary conversation. 0 hour was an Indian parliamentary conversation. Guillotine in budget. Putting on undiscussed demand to vote due to lack of time. Guillotine was in budget. Putting undiscussed demand to vote due to lack of time. Public accounts pack. Public Account Committee pack contains CAG reports. Public Account Committee examines CAG reports. Key statutory and executive body was Niti Aayog executive body replacing planning commission. Niti Aayog गोटे executive body replace कौन कला planning commission. Central Information Committee CIC statutory body RTA Act 2005. Central Information Commission CIC was a statutory body Niti Aayog Act 2005. Central Vigilance Commission statutory body CVC Act 2003. Central Vigilance Commission statutory body CVC Act 2003.